नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है टेस्ट योर नॉलेज सीरीज ऑन फोटोकेमिकल स्मॉग। दिस वीडियो हैज 12 क्वेश्चंस, ऑल मल्टीपल चॉइस on photochemical smog. No matter what exam you're preparing for, test your knowledge using this video. So let's begin. But before that, if you are new to my channel, please do subscribe. And if you like this video, share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina. Question number 1. Which of the following capital cities in the world experiences a mix of classic smog and photochemical smog most frequently? इनमें से कौन सा शहर है जिसमें क्लासिक स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग दोनों एक साथ होता है और बार बार होता है, सबसे फ्रीक्वेंटली होता है? तेहरान, जो ईरान की राजधानी है, न्यू दिल्ली, जो हमारे देश भारत की राजधानी है, बीजिंग, जो चाइना की राजधानी है, या मेक्सिको सिटी, जो मेक्सिको की राजधानी है। और करेक्ट आंसर इज सी, बीजिंग. And the answer is Beijing because we all know that China has one of the largest number of industries, and when you have large number of industries, you also need power to run those industries, and by power is supplied by thermal power plants, mostly in India and China, and that is why China has maximum thermal power plants everywhere, including in and around Beijing, and that releases sulfur dioxide that causes classic smog, whereas the regular air pollution releases NOx and hydrocarbons, and that causes photochemical smog. ठीक है, तो बीजिंग में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है क्योंकि इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए पावर चाहिए और पावर प्लांट से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इसके अलावा जो व्हीकलर पोल्यूशन है उससे नॉक्स रिलीज होता है और हाइड्रोकार्बन दोनों सोर्सेस से रिलीज होता है। तो एज अ रिजल्ट वहां के एटमोस्फेयर में हाइड्रोकार्बन भी है, नॉक्स भी है, सॉक्स भी है और ऑक्सीजन तो होता ही, और ये सब मिला के फोटोकेमिकल स्मॉग और क्लासिक स्मॉग दोनों होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following are primary pollutants in photochemical smog? इनमें से कौन सा फोटोकेमिकल स्मॉग में प्राइमरी पोल्यूटेंट है? ए, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और नाइट्रिक ऑक्साइड, और या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर बेंजीन एंड नॉक्स, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नॉक्स. ओके, सो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स इन फोटोकेमिकल स्मॉग आर NO2, NO and methane. A is the correct answer because N2O or nitrous oxide does not take part in photochemical smog, and benzene not necessarily. benzene भी कोई जरूरी नहीं कि photochemical smog formation में पार्ट ले. सबसे ज्यादा methane, जो कि कॉमन हाइड्रोकार्बन है, रिलीज होता है ऑटोमोबाइल से, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस और नाइट्रिक ऑक्साइड ये होता है. ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो N2O है वो फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेता है. क्वेश्चन 3. Which of the following are secondary pollutants in Los Angeles smog? Los Angeles smog में या फोटोकेमिकल स्मॉग दोनों एक ही बात है. इसमें सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? ए, बेंजीन, बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी, ओजोन एंड पैन, या डी, फॉर्मल्डिहाइड एंड एक्रोलीन. चूज फ्रॉम द कोड्स बिलो. A and B, C and D, C, A, B and C. A is benzene, B is NO2 and C is ozone and pan, या D, all of the above. इसका सही उत्तर होगा C and D. B is the correct answer. बी ओजोन, सी है ओजोन एंड पैन, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होता है. इसके अलावा एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड इज आल्सो एन एल्डिहाइड एंड एक्रोलीन इज आल्सो एन एल्डिहाइड. सो ओजोन, पैन एंड एल्डिहाइड्स, these 3 pollutants are formed as secondary pollutants in Los Angeles smog. Okay, so correct answer is B, C and D. C is ozone and pan, D is formaldehyde and acrolein. ठीक है, question number 4. What is the chemical formula of pan? peroxyacetyl nitrate का chemical formula क्या होता है? R, which is a hydrocarbon, CH3O या H हो सकता है या कुछ भी हो सकता है. Then C, then double bond O, फिर O NO2 और NO2 फ्री रेडिकल है यहाँ पर. इसके अलावा RCO3NO2 या RCHO formaldehyde या CH3COOH acetic acid. Choose from the codes below. Only A is correct. Both A and B are correct. C and D या D, none of them. Correct answer is both A and B are correct. So B is the correct answer. RC double bond O NO2. The formula in A and formula in B is the same. ठीक है, peroxyacetyl nitrate ये होता है ये पेरोक्सी ग्रुप है. ठीक है, और ये एसिटाइल ग्रुप है और ये नाइट्रेट है. एसिटाइल, पेरोक्सी और नाइट्रेट. ठीक है, तीनों ग्रुप्स हैं इसमें. क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following factors affects the formation of photochemical smog in A, sunlight, temperature and hydrocarbons. B, UV light, inversion conditions, aliphatic hydrocarbons. C, infrared rays, high temperature. या D, UV light, inversion conditions, aliphatic hydrocarbons and geographic conditions.
The correct answer is D. Ultraviolet light और inversion condition और aliphatic hydrocarbons का presence और geographic conditions ये सब कुछ फोटोकेमिकल स्मॉग के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में फोटोकेमिकल स्मॉग का रिएक्शन होता है। इन्वर्जन कंडीशन में जो होता है पोल्यूटेंट्स ट्रैप्ड हो जाते हैं लोअर एटमॉस्फेयर में और आपस में रिएक्ट कर पाते हैं, और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो मैक्सिमम फोटोकेमिकल स्मॉग में पार्टिसिपेट करते हैं और उससे फाइनली पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनता है। और ज्योग्राफिक कंडीशंस, अगर आसपास कोई माउंटेन है तो उससे भी एयर ट्रैप्ड हो जाता है और डिस्पर्स नहीं हो पाता है और सारे पोल्यूटेंट्स को जगह मिलती है आपस में रिएक्ट करने की। सो अल्ट्रावायलेट लाइट, इन्वर्जन कंडीशंस, presence of aliphatic hydrocarbons and geographic conditions are all important for the formation of photochemical smoke. Question number 6. Which of the following inert species does not take part in photochemical smoke? Inert means inactive. NO, NO2 and NO3. B, N2O and non-volatile hydrocarbons. CO2 या DVOCs. तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड ये सभी फोटोकेमिकल स्मॉग में पार्ट लेते हैं। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बहुत थोड़े समय के लिए बनता है, इट्स अ हाईली अनस्टेबल स्पीशीज ऑफ chemical species and is formed for a very fraction of time because it quickly reacts to form another substance. And N2O is inert and non-volatile, the hydrocarbons that do not fly away in the atmosphere, non-volatile, they do not fly away. So these, they do not evaporate, they remain stable on the ground. So these hydrocarbons do not take part in photochemical smog. And N2O, nitrous oxide, is also highly stable in the lower troposphere and does not take part in the photochemical smog. So N2O जो है nitrous oxide और नॉन वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोकार्बन उड़ते नहीं है, जमीन पर ही रहते हैं, ये फोटोकेमिकल स्मॉग में पार्ट नहीं लेते हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following geographic locations is most likely to experience photochemical smog? इनमें से कौन सा geographic location है जो फोटोकेमिकल स्मॉग में जिसको फोटोकेमिकल स्मॉग ज्यादा प्रभावित करेगा? A, a city located in a basin surrounded by highlands. B, a city located in a valley surrounded by mountains. या C, a city located in plains. Choose from the codes below. Only A, both A and B, only C, and none of the above. The correct answer is B, both A and B. A city located in a basin surrounded by highlands where the air could be trapped in the basin and the pollutants do not disperse. Similarly, a city located in a valley surrounded by mountains, again the air gets trapped in the valley and does not get dispersed, and that causes the pollutants to react among themselves and form photochemical smog. So B is the correct answer. ठीक है, कोई भी जमीन जो निचली जमीन होगी और आसपास ऊंची जमीन होगी या पहाड़ होंगे, वहां पर हवा आसपास भाग नहीं पाती क्योंकि पहाड़ और ऊंची जमीन से घिर जाती है हवा वहीं पर ट्रैप्ड हो जाती है और जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको ब्रीडिंग ग्राउंड मिलता है आपस में रिएक्ट करके स्मॉग बनाने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following activities is likely to result in photochemical smog? C, burning of coal, या D, burning of cow dung cake. Choose from the codes below. Only A, both A and B, only C, या A, B and D. Burning of plant waste releases hydrocarbons and nitrogen oxides. So of course it causes photochemical smog. And burning and automobile pollution again releases NOx and hydrocarbons. So this also causes photochemical smog. And burning of cow dung cake, this releases SO2 as well as NOx. So this will also add to photochemical smog. So the correct answer is D, A, B and D. Only burning of coal, which releases maximum amount of sulfur, does not contribute to photochemical smog, but it contributes to classic smog, okay, which is also called the London smog. Question number 9. Which of the following statements about photochemical smog is not true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में सही नहीं है? It is aggravated in the presence of volatile organic carbon compounds. True. It is initiated by ultraviolet radiation. True. Photochemical smog is oxidizing in nature, hence is called oxidizing smog. This is also true. It occurs under inversion conditions. This is also true. So, choose from the codes below. Only A, only B, only C, and none of the above. D is the correct answer. None of the above. ये सारे स्टेटमेंट सही है, तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो सही नहीं हो. So all these statements are true. So now let's move on to question number 10. Why is photochemical smog called oxidizing smog? A, because it yields pan and ozone as secondary pollutants, which are strong oxidizing agents. B, this smog oxidizes substances that it comes in contact with. Yes. 3. C, primary pollutants like CH4 and NOx are oxidizing in nature. Choose from the codes below. Only A, both A and B, only C, yet D, none of the above. Correct answer is B, both A and B, because it yields pan
and ozone. These are secondary pollutants, and these are strong oxidizing agents, and these do oxidize substances or biochemical enzymes, etc. that it comes in contact with, and that is why pan and ozone, they cause heavy damage to plants because they are strong oxidizing agents, and ozone causes cracking of rubber. Okay, so B is the correct answer. Now let's do question number 11. Which of the following is not an end product of reactions occurring in photochemical smog? इसमें से कौन सा photochemical smog का end product नहीं है? A pan, B formaldehyde and acrolein, C ozone या D benzene. Okay, the correct answer is D, benzene. Benzene जो है वो secondary pollutant नहीं है, वो end product नहीं है. Pan is an end product or a secondary pollutant. Formaldehyde and acrolein both are aldehydes, and these are also end products. Ozone is also an end product. Only benzene is not an end product. Okay. Question number 12. Which of the following is the rate determining step in the following smog forming reactions? इनमें rate determining step कौन सा है? 2NO plus O2 is equal to 2NO2. NO2 in UV light undergoes dissociation and gives NO plus free oxygen atom. And this free oxygen atom reacts with oxygen in the atmosphere to form ozone. तो इसमें rate determining step कौन सा है? इसमें rate determining step होगा B, because जितना NO2 dissociate होगा उतना ही NO form होगा, और फिर ये NO2 रिएक्शन होगा, और फिर ऑक्सीजन फ्री होगा और ओजोन फॉर्म होगा. सो बी इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. आंसर. आशा है आज जो हमने डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा. In case you have any doubts, any confusion, please let me know in the comments below. And please do share this video with 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina. Check out the description box.